हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में। हियर वी विल स्टडी अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस टू forming a copies of original DNA. So, definition of replication. DNA replication is the biological process of producing two identical copies of DNA from original DNA molecule. DNA replication is a biological process. So, biological process means occur inside the living cell, not the outside the living cells. DNA replication occur in all living organisms without any exceptions, acting as the most essential part of the biological inheritance. Inheritance means transfer of characters one generation to another generation. This is essential for the cell division during growth and repair the damaged tissue. So why DNA replication occur? Because the cell division and damage repair. While it also ensures that each of new cells receive one copy of DNA. So this is the dividing cell and this is the DNA. So every time of cell division, one cell is divided into two cells, and before cell division, DNA multiply into two and half distributed into the both of the cells. It depends on the how many cells are there. So according to their cells carry DNA. So DNA is made up of double helical structure of two, two polynucleotide chains which are complementary to each other. The double helix describe the appearance of double-stranded DNA, which is thus composed of two strand linear that run opposite to each other and twist together to form helical structure. So, if you study the structure of DNA, then you will easily understand this statement. If you're not, so maybe you cannot understand, but here we will explain this. So this is the structure of DNA. So this is the structure of DNA and made up of two complementary chain, one chain either one chain this is, and both of the chain made up of nucleotides are the monomer of DNA, and both nucleotides are attached, I mean multiple of nucleotides are attached together and form a nucleotide chain, polynucleotide chain, and these two polynucleotide chain helically arranged to each other and form a right-handed helical structure of DNA. And both chain are complementary to each other. Complementary means uh, which can code each together and anti-parallel to each other. So this end is the 5' and this is the third end, and then this is the third end and this is the 5' end. So the third end lie opposite to 5' and 5' are lie opposite to third end. So during replication these strands are separate. During replication both these strands are separate each other, and each of a strand on the DNA molecule serve as a template like a framework which code information for the forming of next new DNA, template for the production of its counterpart. A process referred to as a semi-conservative replication. Semi-conservative means when a DNA is replicate, half of the DNA is parental and half is the new. For example, so these two strands of DNA separate. Okay, sorry. These two strands of DNA separate, and these are the parental DNA strand, and now these are the new DNA strand. So this is the
DNA replication. So when the DNA is replicate, half of the DNA is parental and half is the new. So this is nature of the DNA is called as semi-conservative nature of DNA. So if you understand, during replication, these strands are separated to each other. Each strands of the original DNA molecule serve as a template for the production of counterpart of the process. The process is called as semi-conservative replication. As a result, semi-conservative replication, a new helix will be composed of an original DNA, original means parental DNA, as well as newly stranded DNA means daughter DNA. So how the replication take place? Through the enzymes. Many enzymes are involved in the DNA replication. First of all, this is the helicase. Helicase is the enzyme which breaks hydrogen bond present between the nitrogenous base of DNA. So if you read the structure of nucleotides, you can easily understand these are the nitrogenous base and also these are the nitrogenous base. This is the bond of hydrogen bond. Okay, and here is the sugar, the here is the sugar, and this is the phosphate, and now sugar and nitrogenous base, hydrogen bond, nitrogenous base, sugar, and this is the phosphate, and this is the phosphate. So two nitrogenous base of two different polynucleotide chains are attached together with the help of hydrogen bond, and nitrogen base attached with the sugar via the glycosidic bond, and sugar attached with phosphate group through the phosphodiester bond. Phosphodiester means one bond is one bond this, and both of them make together phosphodiester bond. This is the structure of polynucleotide chain. This type of repeating units are form a polynucleotide chains or DNA strands. So this bond break by the helicase and two chains of DNA will be separate to each other. Then DNA polymerase. So now we can understand this is the DNA, and if treated by helicase, this like as a two separate chains, and these separate chains now treated by the primase. Primase bind the primase bind the primer of DNA, primer of RNA on the DNA. Then primase after primase, DNA polymerase work and form a DNA molecule of newly strand. Newly strand DNA molecule formed by the DNA polymerase. The enzyme responsible for the catalyzing the addition of nucleotides. Addition of nucleotides substrates DNA in the 5 to 3 direction. 5 to 3 डायरेक्शन में ही डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है. इफ डायरेक्शन इज 3 to 5, DNA polymerase cannot be work. 5 to 3 direction during replication also perform proofreading and error correction. Proofreading and error correction means कि DNA polymerase एक ऐसा एंजाइम है जो कि ये इंश्योर करता है कि DNA polymerase के बनाए गए DNA में ना ही कोई एरर होगा और उसमें कोई भी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होंगी. अगर इफ ऐसा होता है तो उसको खुद से ही करेक्ट कर देगा. सो देन function of ligase remove this RNA primase and make now finally make two DNA molecule synthesized. Topoisomerase function is the helical structure of DNA is stated by the topoisomerase. So now we will study this again.
एक्स्ट्रा स्लाइड इज देयर। सो चलिए मैं यहीं आपको समझाती हूँ। सो यू कैन इमेजिन this is the DNA. Okay, this is the double helical DNA and having the hydrogen bond between two nucleotide chains. Okay, and if we treat this DNA with the topoisomerase, this DNA will be straight or uncoiled like this. If like this, then this DNA treat with helicase. Helicase break these hydrogen bond and separate the two DNA strands. Now, function of primase bind the RNA primer at 3 to 5 direction. Sorry, 5 to 3 direction. This is the 5 and 3 and this is the 3 and 5. So this is the double-stranded DNA strand by the topoisomerase and separated by the helicase, and now primase bind to the site where the replication begin. Now DNA polymerase start the DNA replication. So then DNA ligase remove these primers, and now we can say two DNA strand are formed. Understand? This is the summary of DNA replication. If you draw this type of diagram in your exams, you secure 100% of marks. With label diagram, without any label, it is useless. So this is the DNA where the DNA replication occur. This process is seen here. So this is the DNA. This is uncoiling by the helicase and formed by the DNA polymerase. स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हमने एंजाइम्स बात कर लिए हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है उसके बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले यही बात की जाएगी वेयर वी कैन स्टार्ट द डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड ऑरआई। ऑरआई इज अ रिच एडेनिन थायमिन सीक्वेंस। इसका रीज़न मुझे आप बताएंगे कि एडेनिन थायमिन सीक्वेंस को पे ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों है कंपेयर टू साइटोसिन एंड ग्वानिन सीक्वेंस। लिखा हुआ है ड्यू टू बॉन्ड्स। चलिए, एडेनिन थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं दो होते हैं। एडेनिन एंड थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन आदि नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए। एडेनिन थाइमिन के बीच में दो ही बॉन्ड्स होते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। सो वी कैन इजीली ब्रेक 2 बॉन्ड्स कंपेरिजन टू 3 बॉन्ड्स। अनजिपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस विद रिच एडेनिन थाइमिन सीक्वेंस। अनजिपिंग किसके थ्रू की जाएगी? हेलिकेज के थ्रू। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अनवाइंडिंग यानी कि उसको बाय द हेलिकेज एंजाइम विद which break the hydrogen bond present between nitrogenous base, result replication fork. Replication fork, this is the DNA and these are the separated portion of DNA and called as replication fork. This is the 3 to 5 direction and 5 to 3 direction में ही DNA replication होगा with the DNA polymerase, and this is the another end. Leading and lagging strand, DNA is read by the DNA polymerase 3 to 5 direction, meaning the new strand of enzyme, meaning DNA is read by the polymerase 3 to 5 direction, which means newly DNA synthesized as the 5 to 3 direction. So if we can say, आप कहेंगे कि मैंने क्या कहा है, चलिए। So
डीएनए पॉलीमरेज अगर 3 से 5 डायरेक्शन में इस डीएनए के न्यू डीएनए के ऑल स्ट्रैंड को रीड करता हुआ जाएगा और उसको बनाता जाएगा, तो वो तो 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कभी भी 3-3 नहीं होते, 3-5 ही होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल ही होते हैं। सो यही यहाँ कहा गया कि डीएनए इज read by the DNA polymerase in the 3 to 5 direction, meaning the new strand is synthesized in 5 to 3 direction, since the leading and lagging strands are formed in opposite direction at the replication fork. So leading, this is the leading strand and this is the lagging strand. Lagging strand जहाँ पर डीएनए टुकड़ों में बने और लीडिंग स्ट्रैंड जहाँ पर डीएनए एक साथ बने। अब ये क्यों है टुकड़ों में, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड्स क्या होता है? द लीडिंग स्ट्रैंड इज द स्ट्रैंड ऑफ न्यू डीएनए विच इज सिंथेसाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द replication fork. This fork is DNA replication is continuous. Lagging strand, the lagging strand is synthesized in short, ये short में बन रहे हैं, separated segments में बन रहे हैं. On the lagging strands template, a primase read the template DNA and initiates the use of a short in complementary primer. A DNA polymerase extends the primer segments forming Okazaki fragments. The primers, as the name moved and replaced with DNA and fragments, are joined by the ligase. यहाँ कंप्लीट हिस्ट्री लिखी हुई है, यहाँ इसकी कंप्लीट। चलिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सो दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जहाँ पर डीएनए कंटिन्यूसली बनेगा, और यहाँ पर टुकड़ों में क्यों बनेगा? क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो कंप्लीट डीएनए को एक साथ में अनकॉइल नहीं कर दिया जाता है, थोड़े थोड़े पोर्शन में ही डीएनए को अनकॉइल किया जाता है। सो जितना डीएनए अनकॉइल होता रहेगा उसी को ही डीएनए रेप्लिकेशन होता रहेगा, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज उसको रेप्लिकेट करता रहेगा, अदरवाइज बाकी नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट इतना डीएनए अनकॉइल हुआ, ठीक, ये तो लगातार बनता ही जा रहा है। सो डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ से बनाया, लेकिन जब उसने देखा कि भाई मैं तो यहाँ से बना करके आ चुका हूँ और ये पीछे से फिर से अनकॉइल हो चुका है, तो यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ बनेगा। अब ये बनाएगा कैसे? फिर ऐसे ही कि उसको डीएनए प्राइमेस आरएनए प्राइमर ला करके बाइंड कराएगा और डीएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ से बनाने स्टार्ट कर देगा डीएनए रेप्लिकेशन। और इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, और इस पूरे स्ट्रैंड को हम कह रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड। Fifth is proofreading and DNA repair. If DNA during replication is form with any type of error, DNA polymerase correct these errors and form a exact and correct 100% or 100% formation of 2 new strands of DNA. सो फाइनली प्रूफ रीडिंग के बाद में डीएनए स्ट्रैंड बन जाते हैं 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक दैट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई ऐसा पोर्शन जो समझ नहीं आया।